if you can see, I just took the code from my program. Okay, this code was available online, or you can type it if you want. Okay, and I just pasted it on the window here where I can execute the code in Overleaf. Okay, basically what I did was I went here and I opened a new file. Okay, and I called it hello.tech, and I just pasted the code and I compiled it, and I'm seeing the outcome. So it's working. So that's a good sign. Okay. So I think if you go on the web page overleaf.com, then on the top right hand side, you're seeing there is a login option. So all you have to do is you have to click on the login, choose your username and password, or you can use your Google account, and then you just have to log in with your email. And once you log in, it should take you to this project page, and all the projects that you have saved, that should open up. Okay, and so inside my project, I have two tech files, so I can see both the tech files now. Okay, I was just using the hello.tech file, and there was another file which was main.tech, and that was for the other code I was executing before. So it is pretty straightforward. तो मेरा डे टू डे एक्टिविटी है, उसके लिए मैं उसको यूज़ करता हूँ, और आई नेवर हैव एनी इश्यूज विद द स्टफ आई एम डूइंग. So you have to see what you can get out of using LaTeX for your own, uh, you know, activities or things that you do, right? So वैसे तो हम जनरली सारी चीज़ कवर करेंगे, और जहाँ आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपके ऊपर ही है ना. पीपल आर इन डिफरेंट पोजिशंस in their respective universities or colleges. Some people are constantly drafting letters, some people are constantly writing reports like lab reports or something. um, you can imagine how beneficial it will be to actually make lab reports in LaTeX, because figures include करना, और एक टाइप ऑफ एक ही फॉर्मेट यूज करना जिसमें हेडर हमेशा सेम ही हो, फुटर सेम हो, है ना, नंबरिंग पेजेस के सेम हो. सो वो सारी चीज़ें, कोई भी लोगो आप कभी भी लगा लो, है ना. तो वो सारी चीज़ें लेटेक में आपको बहुत हेल्प करेंगी, है ना. एक लैब रिपोर्ट हो गई, या आपका, जैसे मैंने कहा था कि मैं जब रिसर्च पेपर लिखा अभी रिसेंटली, तो सबसे पहले मैंने लेटेक में लिखा था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. आई विल ट्राई टू ब्रिंग अप दैट पेपर एज वेल, and we can see what I was doing, and then we'll figure out for the thesis as well and other things as well. So आपके डे टू डे एक्टिविटीज में आप उसको जहाँ इनकॉर्पोरेट करोगे, वैसे आप उसको यूज करना शुरू करोगे. फिर जितना रेगुलरली आप यूज करोगे तो उतना आपका हाथ उसमें सेट हो जाएगा. एंड यू नो मेरी तो मेमोरी बहुत ही वीक है. आई एम नॉट वेरी गुड इन रिमेम्बरिंग specific commands for some things. बट विथ लेटेक मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज अगर मुझे कोई भी चीज़ ढूंढनी है, सो इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आई गेट इट विद इन अ सेकेंड. सो ग्रेट गाइस. सो आप अपने उस पर लॉग इन कीजिए. ठीक है, आप एक नई फाइल क्रिएट कर लीजिए वहाँ पे ओवरलीफ में, है ना. जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट की अभी, आई क्रिएटेड अ न्यू फाइल लाइक दिस. ओके, you can just name like a new file, something like this, new file 1 or something. You can create a file. Okay, and once you create a file, it is appearing on the left hand side here, and then you can double click on it, and it is empty in the beginning. Okay, और उसमें आप अपना जो कोड है वो टाइप कर सकते हैं, है ना. So you can see the first thing that we are writing in the code is we are putting a slash. Okay, and this slash is basically telling the LaTeX that there is a comment that is coming, that is predefined in LaTeX. Okay, so every predefined comment in LaTeX is given by this backslash. Okay, so उसके बाद there is a command which says document class. Okay, so LaTeX में different kind of document classes are already defined. Okay,
And we are just specifying here that the document class we'll be using is an article type. Okay, and जो भी आपका यहाँ पे document class होगा उसके हिसाब से आपका output generate होगा. Okay, so every different document class has different type of outputs that are predefined in LaTeX, uh, and that's how the command will be executed. Okay, all we are doing here is we are specifying that the size of the text will be in 12 point scale. Okay, so it just tells you how much the size will be. So 12, and pt stands for point. Okay, and in the next command what you're saying is you are trying to begin the document. So naturally the command to begin the document is just slash begin document. Okay, and so the document what you're writing, right, has to be inside this parenthesis. Okay, because you can imagine that suppose you are beginning let's say a figure, then the command that will go inside here will be a figure. If you are beginning a table, then the command that will go here will be a table. So right now you are beginning a document, so all you have to do is you have to do slash begin, and in the parentheses you have to write document. Okay, so in LaTeX, what happens is all these predefined commands, they are color coded. So you can see that there is highlighting of the syntax that happens, and it tells you that this is all the you know the commands that the LaTeX knows. Okay, and whichever is not highlighted in color is the and input that the user is giving. Okay, so all we are doing here is we have begin a document and we are entering some text, this hello world here. Okay, and we are then ending our document. Okay, so to end the document all you have to do is slash end document. Okay, and you will realize in LaTeX, the commands are pretty obvious the way they are written, so it is easy to understand what is going on. Okay, and all you do is you compile it. There is a compile button on top. Okay, and if you do that, the output will appear on the right hand side. Okay, so there is a PDF document that is generated, and you can see the output here. It says hello world. Okay, so whatever you're writing inside the document is getting printed here. So try to execute this code and see if you are getting an output. So you can see I can type any text I want. This is our first document in LaTeX that we have created. Okay, and I just compile it again, and it should appear in the document. Okay, now the reason why it is coming in the next line is that because we have put this double slash marks here. Okay, you can see to tell LaTeX that we want the text to be in a new line, you have to put this double slash here. Okay, so double backslash that you're putting will tell that it has to go in the new line. Okay, so for example, if I want to put this text after the first document in the next line, all I have to do is I have to put a double slash here. Okay, and I compile it, and then now it has gone to the next line. Okay, so this is how you just enter a new line in your document. Or else if you keep typing, then it will automatically take the document to the next line. Suppose I keep entering text like this, you can see that automatically the text has gone in the next line. So what I was saying is, suppose you want to change the size of the text, then all you can do is you can just change the point scale here. Okay, to make it suppose 11 point, and then you can see if you compile it, the size of the text is increasing in your PDF. Okay, so and just to let everybody know, there is the option here you can download the PDF. Okay, so if I click on this button, it's actually downloading a PDF file on my computer. You can see the output here. This is your PDF document that is being generated. Okay, the other thing that I was mentioning is, suppose that you want to change a specific text and make it bigger, or make it bold or something italic, then what you have to do is, in where the text is appearing, you have to choose that particular text. Okay, and suppose you want to make it bold, then all you have to do is you have to do slash text boldface. So these commands
are pretty straightforward. Okay. I certainly don't remember all of them. Okay. Let's say if I do text italic, so I think it's IT. Okay. Let's see if it italicizes this text. And yeah, it does that, you see. So in the output, you can see now that the particular text that I had highlighted, that is coming in italic, and the rest is coming as it appears. Okay. So you have good control over what you want to do with the text, how you want to edit it. Suppose I want to make the entire text italic, so I can just take and put the entire text in the parenthesis and compile it. And now you can see that the entire text is italicized. Okay. This is, we are doing online. So I just wanted to let you know that I have this file, for example, in a folder on my computer. Okay. So let me just show you. The file is in this folder. Okay. It's called practice, and it appears like this. This is how the tex file appears. Okay. It says TEX, so it is pronounced tech. Okay. With a K. So if I just double click on this file will open in a LaTeX editor. Okay. And the editor looks like this. All right. And now I have this window on the left hand side where I have the code. Okay. And I have a bottom window that is giving me messages whether the code is getting executed properly or not. And on the right hand side, I am seeing the output. Okay. So here you see I can increase the size here, so it's better visibility for you guys, hopefully. All right. So I just compiled it. There is this green button on the top to compile it, and I'm seeing the output here. Okay. एक्सक्यूज मी सर, ये सारी जैसे कमांड्स वगैरह ये हमें कहाँ से मिलेंगी, जैसे मतलब इटैलिक करने के लिए या बोल्ड करने के लिए? हाँ, that's a very good question. So suppose you don't know a command. Okay. Suppose I want to underline a text. Okay. Yes. So you can just go in Google, underline text in LaTeX. There you go. So Google में just जाइए, उस पे search कर लीजिए, and you will find so many websites that will give you the commands. Suppose you don't know for something. Okay. So let's say I'm just seeing here, and it says underline science. So let's try this command. Okay. So let's try underline science. Let's see if I bring it here in my code. Okay. And I'm saying now it's underline this thing, and I execute it. And now you can see the output. You see the science is underlined. सबको दिख रहा है? Yes sir, yes sir, now it's okay sir. So like I was saying, सारा information online बहुत easily available है. मेरे को पता नहीं था command. I just searched for it within couple of seconds. I found it. This was a simple example. Of course, there could be cases where it's a much complicated one. So even in those cases, I never have trouble. और मैं बता रहा हूँ, frankly, I don't even remember the commands that much, because that is not my goal. It's not my goal to become a good programmer or something, but my goal is to get my job done as quickly as possible, and the output should look very good, and that is my goal. So every time I execute this command here, like I was mentioning, in the same folder where the file is, okay, in my computer, there is a PDF document that is being generated. Okay. So you can see there will be a PDF document that says hello, because that is the file name. Okay. So if I click on this, this is the PDF that we just generated. You can see, okay, the output is the same. The science is underlined. So that is saving a PDF document every time I am compiling it. Okay. So the good part about having the editors is that you can see the execution of the code real time. Okay. And an advice to the beginner is, don't write too much code at the beginning. You execute after every a minute or so that if you suppose make a mistake, suppose I've made a mistake here and I execute it, and now I'm getting an error message here that undefined control sequence. So it is not recognizing it.
okay, and it is exactly pointing to me where the error is, you see. So that kind of gives you an idea of, suppose you have typed something wrong, and then you can go back and you can look like, what is the problem happening, and then you can fix it, and you can recompile it, and then you're good to go again. ओके, सो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसा ना हो कि आप 20-25 लाइन एक साथ लिख दो और उसे कंपाइल करें और फिर आप अटक जाओ कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है ना। सो आप जो भी लिखते हैं थोड़ा लिखिए, 1-2 लाइन ऑफ कोड लिखिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए, एंड दैट वे यू कैन debug your program if something doesn't get executed. Okay, so ये तो हमारा सबसे बेसिक प्रोग्राम था, आपने देखा इट्स सो इजी टू जनरेट अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट नाउ. So any text you put here, you can generate a PDF document. So let's go to the next one, which is again this code is provided to you. Okay, आपका ड्राइव पे है, तो आपको ये सारे लिखने की जरूरत नहीं, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो. और अब आपके पास ये कोड आ गया है, तो फ्यूचर में आप इसी कोड में आप डेवलप कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द कोड फॉर द आर्टिकल generation. Okay, so again, so the document class here is defined as article. Okay, and now there are predefined packages that are installed along with your LaTeX. Okay, so here we are calling a package. Okay, so we are saying just slash use this package, and the package here is geometry. So basically it is defining your horizontal width and the vertical width of your paper. Okay, so left margin and the top margin and the bottom margin are being defined. Okay, so to define the margins, you have this command which says h margin, which is the horizontal margin. So you have your horizontal margin, going from left to right. Okay, and you have another command which is v margin, and it is from top to bottom. Okay, so here you can specify exact size that you want. So in this document, the exact size is given as 2.5 centimeters. So we want 2.5 centimeters from the left. Okay, and we want 2.5 from the top and bottom, and 2.5 from the right as well. Okay, and cm stands for centimeter. Okay, so again, if I execute this code, I'm going to get the output on the right hand side. Okay, and so you can see the output that is coming is coming at 2.5 centimeter from the left margin. Suppose I change it to, let's say, 4 centimeters. So now you can see the text has moved 4 centimeter from the left margin. Okay, so you can pretty much specify exactly where you want the text to appear in your document. Okay, so you can be very precise with your command. Okay, when we begin the document, you have to specify always this begin document command. Okay, and of course with the begin document there will be always an end document command as well. Okay, so now whatever you type in between the begin document and the end document will be your output that is appearing in your PDF that you're generating. Okay, so in the article, what we can specify are different sections that you're trying to write. Okay, and the command is pretty straightforward. It is just slash section. Okay, and here in the command you can just give the heading of the section, and that is what these parentheses do. So suppose I say section 1, okay, and I execute it, and so on the right hand side you can see that now the heading has changed to section 1. Okay, and as you can see, if you want to have a subsection, then the command again is straightforward, slash subsection, and then you can just say that whatever the heading you want to put, you can again put it inside the parenthesis and you can execute it, and that should appear in your output. Okay, एक्सक्यूज मी सर, ये नंबरिंग सर अपने आप आ जाती है सब सेक्शन सेक्शन लिख के? बिल्कुल एग्जैक्टली ये नंबरिंग ऑटोमेटिकली आएगी. LaTeX is smart enough to know which section is coming first, which section is coming second. ओके सर, जैसे सर सब सेक्शन लिखा तो अपने आप उसने 1.1.1 दे दिया, अगर सब सेक्शन है तो 1.1 आ गया.
बिल्कुल बिल्कुल अगर हम बीच में कुछ इंसर्ट करेंगे वो अपने आप नंबरिंग ठीक कर देगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। एंड लेट मी शो यू, आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं ना अभी? हाँ तो जी सर। सपोज अगर मैंने ये सेक्शन, आप देख रहे हैं मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, हाँ जी। और मैंने इसको सेक्शन 1 की जगह में ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ, और मैंने ये कोड अभी एग्जीक्यूट किया। सो ऑटोमेटिकली अब ये सेक्शन जो है जिसमें दिस इज द सेकंड सेक्शन लिखा है, ये ऑटोमेटिकली नंबर 1 हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली नंबर 2 हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली नंबर 3 हो जाएगा। यस सर। सो इट मेक्स योर लाइफ मच इजियर, बिकॉज आपको ये नंबरिंग सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। It's predefined. And not even the numbering, if you notice, the size of the heading, यस सर, यस सर। the size of the heading is also proportional, है ना? सो सेक्शन की हेडिंग बड़ी है, सब सेक्शन की उससे कम है, और सब सेक्शन की और भी कम है। यस सर। सो जो डॉक्यूमेंट आपका जनरेट होता है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। यस आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई इंडेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, सब यस इंडेंटेशन सही आ रहे सर। हैं। दिस इज वेरी गुड थिंग सर। हाँ। So the numbering is automatic, the size becomes proportional, and you can enter as much text as you want between sections. And suppose I just enter some text here in the first section, right? And I keep entering the text, and automatically यहाँ पर वो text आपका पूरा देखिए इतने अच्छे से यू नो द जस्टिफाइड हो रहा है टेक्स्ट ऑटोमेटिकली। आपको जस्टिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, आपका पूरा टेक्स्ट एकदम जस्टिफाइड होकर लेफ्ट टू राइट एकदम सही अपीयर होकर नीचे आ रहा है। तो ये आपको करने की जरूरत ही नहीं। ये जब आर्टिकल क्लास हमने डिफाइन किया है तो ये आर्टिकल क्लास में ऑलरेडी होके आ रहा है। एंड लाइक आई वाज मेंशनिंग बिफोर, सपोज आपको ये चेंज करना है, आपको ये चाहिए कि 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर हो जाए, तो आप यहाँ पे 4 बाय 4 लिख लीजिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मार्जिन, और ये ऑटोमेटिकली देखिए साइज आपका यहाँ पे चेंज हो गया। एंड अकॉर्डिंगली सारा टेक्स्ट आपका आउटपुट का लेफ्ट अलाइंड एंड जस्टिफाइड हो गया। तो इनफैक्ट आर्टिकल के फॉर्मेट में ही आप लैब रिपोर्ट लिख सकते हैं। सपोज मैं अभी इसको ट्राई करता हूँ। सपोज आई वांट टू क्रिएट अ सेक्शन, लेट्स से आई वांट टू डू इंट्रोडक्शन फर्स्ट, ओके, एंड नेक्स्ट सेक्शन मैं चाहूँगा कि लेट्स से इट विल बी मटेरियल्स एंड materials used in the lab, and the next section I want to include is the theory, okay, and now I want to create more sections। जैसे हम लैब रिपोर्ट बनाते हैं, है ना, तो फटाफट मैंने यहाँ पे एक सेक्शन कॉपी पेस्ट किया, और थियरी के बाद मेरा आएगा प्रोसीजर, ठीक है, और प्रोसीजर के बाद सपोज मैंने एक और बार इसको कॉपी पेस्ट किया, एंड उसके बाद आ गया डेटा टेबल्स, एंड फाइनली मेरा लैब रिपोर्ट में आ गया कंक्लूजन एंड प्रिकॉशंस। ये सारे फटाफट कॉपी पेस्ट करके कोड देखिए, कोड आपने लिखा हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। और जहां पे भी सेक्शन की हेडिंग्स है वहां पे मैंने अपनी हेडिंग्स बना ली लैब रिपोर्ट की, और मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। और अब देखिए आपका इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद सेकंड आपका मटेरियल्स यूज्ड हो गया, थर्ड आपका थियरी हो गया, एंड फोर्थ प्रोसीजर, डेटा टेबल्स, and conclusion and precautions. So you see how quick it is. If you notice, what I did was in the margin, पहले सेंटीमीटर में डिफाइंड था, अब मैं इंचेस में डिफाइन कर रहा हूँ। सो आई हैव डिफाइंड 1.5 इंचेस के लिए IN कमांड है, ओके। मुझे याद नहीं था, मैंने जस्ट गेस किया, इट वर्कड। सो यू नो, जैसे मैं कह रहा हूँ लेटेक में मोस्ट ऑफ द कमांड इज जस्ट you know what you will think of, that is probably what it is, okay। So inches के लिए IN है, so 1.5 inch left indent है, 1.5 inch from top indent है, okay। And a couple of additional things, suppose आपको numbering नहीं चाहिए, so what you can do is you can enter here in LaTeX, say page numbering gobble,
and if you enter the gobble command, basically it will eat up all the page numbering. Okay, so you see here there is number 1 and number 2. अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं अभी, तो आपका ये नंबर यहाँ से गायब हो जाएगा. So if you don't want the number to appear, then you can just tell that let the number disappear. Okay, again it has to come before the document begins, so it is pre-specified in your LaTeX. You see, so when you begin document, this is the text that is going in the document, and these commands are telling the document that before you generate the output, these are the things you need to follow. Okay, so these are predefined commands that are dictating how the text will appear in the entire document. Okay. Another interesting thing that you can do, and the reason why I love LaTeX is because suppose अब मुझे numbering वापस चाहिए, I don't need to delete this again. All I have to do is I have to do shift percentage command. If I add a percentage, basically it just you see the highlighting of the text goes, and basically it becomes a user comment that is not going to affect the output of your program. So now if I compile, again I will see the number appear, and the best thing is I don't have to delete this text. Okay, it is always there in my program. When I want to use it, मैं ये percentage sign हटाकर इसको run कर सकता हूँ. When I don't want it, I can put the percentage sign and I can just uncomment this command. Okay, and that is one of the most powerful things you can do with LaTeX, because आपको बार बार आपके कमांड लिखने और डिलीट करने की जरूरत है ही नहीं. आप उसको बस डीकमेंट कर दो और वो हमेशा आपके प्रोग्राम में रहेगा. जब आपको यूज करना है आप यूज कर लो, जब नहीं यूज करना मत यूज करो. Okay, so very important. Percentage sign, it takes your comment and it decoments it. Okay, that way you can put anything that you want in your documents. मैं percentage sign यहाँ पे करके I can write anything and it doesn't affect anything in my program. Okay, suppose I want to get not number 1 to 3. There is a command if I want to have Roman numerals appear in terms of the page numbering, then all you have to do again is you have to type page numbering, and instead of gobble now you can type Roman. Okay, so आप ये टाइप करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप देखिए नीचे आपका रोमन न्यूमरल्स आ गए 1 और ये रोमन न्यूमरल 2 आ गया, है ना. So again, same command, page name numbering, and inside the parenthesis you have to just type Roman, for Roman numerals. Okay. Now what I have done is, if you notice in this same article class, okay, I have now introduced a section called title. Okay, so now I'm defining before the document that there is a title, and let's say it is introduction to I want to do article writing. That's what we are doing and again it is in that curly parenthesis. Okay, now next line I am defining who the author is, so /author, and again in the parenthesis यहाँ पे आप अपना नाम खुद लिख सकते हैं. ठीक है, so I'm going to write my name for me. In your document you can write your own name. Okay, /author, again in the curly parenthesis you can write your own name. And then the third command I'm giving is the date. So I want the date that to print on my article, and so all I have to do is I have to do /date, and inside the parenthesis I am putting \today. So whatever is the date on the day of execution of the program, that date will appear in your output. Okay, और इसे आप execute कीजिए और आपको यहाँ पे आपका heading दिख जाएगा on the right hand side. You see introduction to article writing, my full name is appearing and the date is appearing, and they are appearing in the beginning of the document. Okay, to make them appear here in your document, you have to call them somewhere in the document. So as soon as my document is beginning, I am giving the command make title, and I'm giving the command make table of contents.
Okay, so I've written slash make title and I've written slash table of contents. So now LaTeX knows कि यहाँ पर टाइटल डालना है और यहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स डालना है, ठीक है। और क्योंकि ये आर्टिकल क्लास है, इट ऑलरेडी सीज ऑल द सेक्शन एंड सब सेक्शन जो आपने डिफाइन किया हुआ है, और वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से आपका टेबल बना देगा। So if you notice, Surendra ji, what I did was I added more sections because I wanted to create, a second and third page. Because if you notice, पेज के टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो रहा है, सेक्शन का नंबरिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, प्लस इट इज इवन टेलिंग यू वेयर इन योर रिपोर्ट विच पेज नंबर इट इज. This is such a professional output. It is already telling you कौन सा पेज नंबर 2 पे, कौन सा पेज नंबर 3 पे, ऑटोमेटिकली सारा जनरेट हो रहा है. Yes sir, yes sir. It is much better than MS Word. I'm glad you like it. Actually, I was facing so much time the problem in making table of contents. Exactly. मैं ये कह रहा हूँ, हमारा रिसर्च वाला काम है, हम ये सिंटैक्स में ही अगर हम लोग 2-3 दिन लगाएंगे तो फिर एक्चुअल काम कब करेंगे? Yes sir, yes sir. ओके, सो इमेजिन करो कि आपके पास 200 पेज की रिपोर्ट है, ठीक है, और सडनली आपने यहाँ से एक सेक्शन उठाया, ठीक है, और आपने कहा कि नहीं ये सेक्शन तो पहले आना चाहिए था, ठीक है, और आपने इसको यहाँ से उठाकर कहीं और डाल दिया, ठीक है. And then I'm executing the code and automatically numbering अपने आप करेक्ट हो जाती है. यू सी, अब मैंने यही सेक्शन पहले डाल दिया था तो अभी वो ऑटोमेटिकली नंबर 3 हो गया, ये ऑटोमेटिकली नंबर 4 हो गया, ये ऑटोमेटिकली नंबर 5 हो गया. एंड दैट इज द पावर दैट यू हैव. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एवरीथिंग एनीमोर. ओके, आपने कुछ भी अपने रिपोर्ट में विच इज गोइंग टू सम, मे बी इट इज 10 पेज लॉन्ग, मे बी इज 200 पेज लॉन्ग, मे बी इज 2000 पेज लॉन्ग, हु विल रिमेंबर कि कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे आया, ठीक है, वो सारे नंबर कौन याद रखेगा. तो आपने कुछ भी टेक्स्ट कहीं भी मूव किया, ऑटोमेटिकली रीनंबरिंग हो जाती है. ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एट ऑल, राइट. एंड सिमिलरली आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली रीनंबर हो गया. ओके, सो नाउ अब मैं ये देख रहा हूँ मेरा आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, एवरीबडी कैन सी. ओके, तो मेरा आ रहा है, हेडिंग आ रही है फॉर्मेट ऑफ लैब रिपोर्ट, जो जस्ट जनरेटेड दिस, एंड ऑथर नेम आ रहा है, एंड डेट, लाइक आई सेड, जिस दिन आप कंपाइल करोगे उस दिन की डेट आ जाएगी यहाँ पे. ओके, और इफ यू वांट टू एंटर सम डेट हियर, यू कैन एंटर द डेट. ओके, नाउ आई डोंट लाइक दैट हेडिंग और ये कंटेंट्स और ये सब एक ही पेज में आ रहे हैं. मैं चाहता हूँ कि हेडिंग एक पेज में आए, कंटेंट्स का सेकंड पेज बने, और ये नीचे कंटेंट थर्ड पेज में जाए. सो व्हाट आई कैन डू इज, आई एम सेइंग मेक टाइटल. मेक टाइटल के बाद आई कैन से न्यू पेज और समथिंग, लेट्स से न्यू पेज. ओके, न्यू पेज इज अ कमांड, वेरी गुड. देन टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद भी आई कैन से लेट मी मेक अ न्यू पेज, and so now there will be a new page that will start immediately after the title. Okay, let's see, and there you go. Okay, so आपका ये फर्स्ट पेज हो गया, ऑटोमेटिकली आपने न्यू पेज कह दिया तो न्यू पेज यहाँ पे टेक्स्ट के बाद सीधा नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा, जो भी नेक्स्ट चीज आएगी. तो कंटेंट्स का आपका नेक्स्ट सेकंड पेज बन गया. ओके, एंड नाउ जो आपका टेक्स्ट है ऑब्वियसली वो थर्ड पेज पे चलेगा. So now I like this much better if I want it that way. Or I can, if I want, I can keep the heading and the table of contents on the same page. There you go. Heading and content same page पे है. If I'm trying to save paper, and then ये अगले पेज में चलेगा. ठीक है. So similarly, whenever you want to cut some text and put it in a new page, you want to suppose आपका ये section number 2 के बाद आप चाहते हैं कि नया पेज ही शुरू हो जाए. Okay, so one thing you can do is you can just go to wherever this section is. Okay, and here now you can just say start a new page dash new page, and now if I execute it, the section number 3 has gone to a new page, and in first page I have only section number 1 and 2. Okay, so try out this command, see if you can control where the things are appearing in your document. Good. So अभी ये सेम फाइल है जो हम यूज कर रहे हैं, है ना.
and in the same file what we want to do is we want to change the document class. तो अभी तक हम article create कर रहे थे. Now I want to create a report. Okay, because if you have a report, in report you can have different chapters, right? जैसे कि आपकी thesis है या project report है, उसमें chapters हो सकते हैं. So there is a document class that says as report, and I just changed article to report. Okay, and इसका जो syntax है और इसका जो generated document है, it's a little bit different. Okay, because here what you will have to do is you will have to specify at least one chapter in your report. Okay, so what I'm going to do is I'm just going to give a command here in my document and say that I want to include a chapter, and then whatever the section is that is going inside this chapter, and I'm giving a heading of this chapter as this is my first chapter. Okay, so slash chapter करके मैंने एक heading बना दी है. Single chapter है अभी मेरी report में. Okay, and as you know, if you're writing an article, it doesn't have chapters, but if you have a report, it has chapters. Okay, so now I can go and execute it, and so now you can see in the output you are getting chapter 1. This is my first chapter, and जो पहले section थे वही आ रहे हैं, section, it's all fine. मैंने नया पेज दे रखा है, तो that's why all these things are going in the next page. However, they are all part of this chapter. You can see the numbering has changed. Everything is now 1.1 because this is chapter 1. So now 1.1 first section हो गया, second section 1.2 हो गया, and so on. टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिकली चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं आ रहा है उसमें, मतलब वो नहीं, लिखना उसको पड़ता है. आपको 2-3 बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. एक बार एग्जीक्यूट करोगे तो सिर्फ मेन टेक्स्ट में होगा. सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करोगे तब वो आपका मेन आपका वो चेंज होगा. देखिए अब मेरा चेंज हो चुका है ना. तो ट्राई टू एग्जीक्यूट द कोड मोर देन वंस. हाँ, ये हो गया है सर. ये तो हाँ. जैसे आपका है ना, दिस इज आ गया ना, सब मेरा फर्स्ट चैप्टर आ गया है ना. सो सिमिलरली अभी जैसे यही चीज मैं देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, सो आई एम जस्ट कॉपिंग माय चैप्टर, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग मोर चैप्टर्स. ओके, तो चैप्टर 1 हो गया, मैंने अब कट पेस्ट करके सेकंड चैप्टर कर दिया. दिस इज माय सेकंड चैप्टर, and let me say, and then once again, and then this is my third chapter. Just copying and pasting the code, just heading change कर दिया मैंने, and I'm executing it. Now you will see I have chapter 1, chapter 2, chapter 3 appearing in my document. Heading आ रही है, subsection देखो automatically numbered हैं. The size of the text is proportional. I'm loving this document. And now if I execute it one more time, my table of contents will also change. And now in my table of contents, automatically it is first chapter, second chapter, third chapter, और page numbering automatic हो गई है, और section numbering automatic हो गई है. Everything is looking nice and dandy. Okay, students' names. Let's say I want to include appendix section, so I can include the command /appendix. There you go. Now I have included abstract that is going in my project report. All I did what I said, begin abstract and end abstract, and whatever text I put here will just be included in my abstract. Okay, there you go. I mean, abstract bhi aa gaya isme. So like I'm saying, you have good control. You can do a lot of things. Abhi ye to beginning hai. I think it's a good place to stop. Let's not go much further. Just try to explore these 3 classes first. आपका आर्टिकल क्लास है, आपका रिपोर्ट क्लास है ना. इस पे आप थोड़ा काम कीजिए. जो कमांड्स दे रखे हैं इनको जरा यूज कीजिए. क्रिएट एंड प्ले अराउंड विद द कमांड्स अ लिटिल बिट, है ना. ट्राई टू सी व्हाट यू कैन गेट आउट ऑफ द आउटपुट, and get comfortable a little bit with the working environment of the software. And from the next training session onwards, we will go ahead and start doing the stuff with letter generation, and then we will try to see how to type mathematical equations and how to do tables and other stuff
दैट जो हमारा डे टू डे एक्टिविटी है उसमें हम यूज़ करेंगे उसको, है ना। तो सपोज आपका रिपोर्ट में आपको टेबल बनाना है, या आपको रिपोर्ट में फिगर डालना है, या आपको रिपोर्ट में मैथमेटिकल इक्वेशन डालना है, तो वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। ओके।